Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are here with a new video for Class 2 English Unit 8. So the title of the poem is I am the Music Man. So children, everybody is fond of listening music. What is music? सबको music बहुत पसंद आता है. सभी लोग डांस भी करते हैं music पे. So in this poem we are going to learn various musical instruments. Let's see some of the instruments which are given on the board. So children, this is a guitar. This is a piano. This is a sitar. This is flute. This is shehnai. And these are drums. This is a tabla. And these are cymbals. Let's repeat. These are some of the musical instruments. Guitar, piano, sitar, flute, shehnai, tabla, cymbals and drums. Now let's read the poem. Unit 8. Read and enjoy this poem. I am the music man. So children, what is the title of the poem? The title of the poem is I am the music man. Let's start. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia, pia, piano. Piano, piano. Pia, pia, piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boomri, 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 bom. Boomri, 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 bom. Chalo, children, let's start the explanation of this poem. I am the music man. So, the boy is telling that he is the music man. Who is he? He is the music man. I come from far away. He is telling that मैं बहुत दूर से आता हूँ. He is telling that मैं एक म्यूजिक मैन हूँ. मैं बहुत दूर से आता हूँ. And I can play. और मैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ. Now children, can you see this? Play. P-L-A-Y, play. Children, there are two meanings of play. Let me explain you. दो play के meaning होते हैं. एक play जो हम लोग खेलते हैं. We play the football. We play Ludo, we play hide and seek and एक play ये हो गया, इसका मतलब बजा सकता है. बट इस पोम में प्ले का मतलब होता है ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है. सो चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस प्ले. फाइन. सो व्हाट इज द लिटिल बॉय टेलिंग हियर? द लिटिल बॉय इज टेलिंग दैट आई एम द म्यूजिक मैन. I come from far away. मैं एक म्यूजिक मैन हूँ. मैं बहुत दूर से आता हूँ. And I can play. What can you play? तुम क्या प्ले कर सकती हो? तुम क्या बजा सकती हो? Now this boy is asking a question to this girl. I play the piano. Pia, pia, piano. Pia, pia, piano. Now he is telling that मैं पियानो बजा सकता हूँ. अब पियानो कैसे बजता है? Pia, pia, piano. Pia, pia, piano. Pia, pia, piano. See children? This is the sound of piano. Did you hear? Let's hear it again. So children, did you hear the sound of piano? Piano कैसे बजता है? अभी हमने सुना है. Now let's move ahead. Now, I am the music man. I come from far away. Again this boy is telling that मैं तो म्यूजिक मैन हूँ. मैं तो बहुत दूर से आता हूँ. And I can play. और मैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता हूँ. What can you play? तुम कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हो? I play the big drum. Boomri boomri bom bom. Boomri boomri bom bom. Boomri boomri bom bom. Boomri boomri bom bom. Now this boy is telling to this girl that I am a music man. मैं एक म्यूजिक मैन हूँ. मैं बहुत दूर से आता हूँ एंड मैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ. तुम कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हो? अब ये कह रहा है I play the big drum. मैं, can you see he is having a drum? एंड ड्रम की आवाज कैसी होती है? लेट्स सी.
So children, you have heard this is how the drum beats. ये है drum की beats and this कौन सी beat थी? ये वाली beat piano की beat थी and ये वाली drum की beat थी. Now let's move ahead. Just a minute children. Yeah. Boomity boomity bom bom, boomity boomity bom bom, pia pia piano, pia pia piano. So children, we have learned about two musical instruments. What are they? Piano and drum. Piano कैसे बजता है? Pia pia piano, pia pia piano. And drum कैसे बजता है? Boomity boomity bom bom, boomity boomity bom bom. Now children, what are the new words that we have learnt in this poem? Music man, far, far away, play, piano, drum and boom. Let's repeat. So these are the new words that we have learnt in this poem. Music man, far away, play, piano, drum and boom. Now let's read. Sonia is learning to play the piano. Now what is this sentence here? Sonia is, excuse me children, Sonia is learning to play the piano. Can you see this girl? She is Sonia. What is she doing? She is learning to play the piano. वो piano बजाना सीख रही है. Learn का मतलब होता है सीखना and piano, this is the piano. So she is Sonia. What is she doing? She is learning to play the piano. Now let's move ahead. Yeah, reading is fun. What are the two instruments? What are the two instruments that the music man can play? कौन कौन से दो instruments थे? एक तो piano था और दूसरा drum. So the music man can play piano and the big drum. Let's repeat this answer once again. The music man can play piano and big drum. Next question. Where does the music man come from? वो कहाँ से आता है? He comes from a very far away. बहुत दूर से आता है. The music man comes from far away. Now children, let's talk. If the music man comes to you, अगर कोई म्यूजिक बजाने वाला व्यक्ति आपके पास आता है, what would you ask him to play for you? आप उसे क्या बजाने बोलेंगे? मैं तो उसे बोलूंगी कि गिटार बजाओ. Do you like to hear the sound of guitar? Let's see उसका साउंड कैसा रहता है. This is the sound of guitar, children. So, did you hear the sound of guitar? In this chapter, we learned three sounds. एक piano का sound, other one was drum, and this is guitar. This is how the guitar sounds like. Fine. Now, what would you like to learn? क्या सीखना चाहेंगे आप? Music, dance और कराटे. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती and I like to learn karate. Fine. Now say aloud. Piano, pain, pail. Let's repeat. Piano, pain and pail. Next we have van, valley and boat. Van, valley and boat. Next we have wind, wet and wild. What we have? Wind, wet and wild. Sing this song aloud together. Make up a tune. Now let's read this short song. Hee-oh-ho. Hee-oh-ho, hee-oh-ho, from home to school we go. Hee-oh-ho, hee-oh-ho, from home to school we go. Just keep on singing all day long. Hee-oh-ho, hee-oh-ho, hee-oh-ho. Fine children, I hope you have enjoyed this song. Let's repeat. Hee-oh-ho, from home to school we go. Hee-oh-ho, from home to school we go. Just keep on singing all day long. Hee-oh-ho, hee-oh-ho. Now children, can you see this children? They are coming back from school. जब आप स्कूल से घर वापस जाते हैं तो कितने खुश होते हैं. देखो ये लोग भी कितनी सारी मस्ती कर रहे हैं while they are returning from school to home. Now let's move to the next slide.
let's write. Make sentences using words from the table. For example, a farmer works in the field. Now children, can you see there are 3 columns? First column, second column and third column. Now there are some words given here. Now you have to match the words and you have to make the proper and meaningful sentences. Let's start doing this. First word is a farmer. A farmer. Farmer क्या करता है? What is farmer children? Farmer मतलब किसान. किसान क्या करता है? किसान तो खेत में काम करता है. Here. A farmer works in the field. So what is the first sentence children? First sentence is a farmer works in the field. Now let's go to the second one. A soldier. What is soldier here? Soldier क्या करता है? Let's see. Soldier क्या करता है? Soldier क्या करता है? Uniform भी पहनता है. A soldier wears a uniform. So can you see one thing children? All these are your verbs. What are they? They are verbs. Fine children? Acts, flies, plays, wears, sings, repairs and works. All these are verbs. Now, we were up to soldier. A soldier wears a uniform. Soldier क्या करता है? Uniform पहनता है. Next we have a singer. Singer क्या करता है? गाना गाता है. Of course, singer गाना गाता है. Let's see. Singer sings a song. So the third sentence is a singer sings a song. Now let's go for the fourth one. Electrician. Electrician क्या करता है? Electrician क्या करता है? अपने लाइट रिपेयर करता है, फैन रिपेयर करता है, AC भी रिपेयर करता है. So an electrician repairs lights. So what is the first sentence here? An electrician repairs lights. Now let us move to the fifth one. A pilot. Pilot क्या करता है? एरोप्लेन पे गए हो आप लोग कभी? पायलट क्या करता है? एरोप्लेन उड़ाता है. पायलट 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 फ्लाइज अ प्लेन. आप इसको एरोप्लेन भी बोल सकते हैं. फाइन. अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन. नेक्स्ट एन एक्टर. एक्टर. व्हाट इज एक्टर? कलाकार. एन एक्टर. एक्टर क्या करता है? एक्ट करता है, एक्टिंग करता है. किस चीज की एक्टिंग करता है? वो फिल्मों में एक्टिंग करता है, सीरियल्स में भी एक्टिंग करता है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस हियर? Next sentence is an actor acts in films. An actor acts in films. Now last one, a musician. Musician क्या करता है? What does a musician do? Musician क्या करता है? हमने अभी सीखा था पोएम में. वो म्यूजिक बजाता है. Musician plays music. Musician plays music. So children, you can complete this worksheet by yourself. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो you can take the help from your teachers or your elders. Now, how many musical instruments can you find in this maze? Try to circle at least 4. So children, this is a crossword. What you have to do here is, there are some musical instruments here. Excuse me children. Thank you. So children, this is a crossword. There are some musical instruments here. What you have to do here is, we have to find the musical instruments. Let's quickly start doing this. Yeah. Find out. मुझे तो एक मिल गया. This is piano. What is this? This is a piano. Piano. अभी सीखा था हमने. This is a piano. Then we have iktara. This is how your iktara looks like. And this is a piano. Next we have, what else we have? We have flute here. This is how your flute looks like. This is a flute. This is a iktara and this is a piano. Next we have drum. What we have? Drum. Drum कैसे करता है? Bumdi bumdi bom bom, bumdi bumdi bom bom. This is your drum. Next we have sitar. Excuse me children. This is your sitar. Fine children. So let's repeat all these musical instruments. This is iktara. This is piano. Piano, piano. This is flute. Flute, flute. This is drum. Drum, drum. And this is
sitar, sitar, sitar. Now change these words from singular to plural. Now children, what is singular and plural? सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ what is singular and what is plural. Singular मतलब एक. What is singular? Singular का मतलब होता है एक and plural का मतलब होता है एक से ज्यादा. For example, see, this is singular and this is plural. Let us make two columns here, children. Now, एक apple. एक apple, we'll tell it has apple. एक से ज्यादा apples रहेंगे तो we'll tell it has apples. हम लोग इसमें क्या कर दिया? इसमें मैंने s लगा दिया तो ये एक से ज्यादा हो गए. Next we have bag. एक bag को we will tell it has bag. एक से ज्यादा bag को we'll tell it has bags. Bag, bags, apple, apples, टॉय. एक खिलौने को टॉय बोलेंगे, एक से ज्यादा खिलौने को we will tell it as toys. Fine children. Next we have mobile. एक मोबाइल को we'll tell it as mobile. एक से ज्यादा को we will tell it as mobiles. Fine children. So these are some of the examples of singular and plural. Singular मतलब एक, plural मतलब एक से ज्यादा. Singular मतलब एक, plural का मतलब एक से ज्यादा. Fine children. Now let me give you the example. Let me give you the example. मैं आपको मोबाइल से एग्जाम्पल देती हूँ. Now this is one mobile. कितने मोबाइल से यहाँ पे? Only one. अब ये हो गए एक से ज्यादा मोबाइल. ये हो गए आपके मोबाइल्स. फाइन चिल्ड्रेन, ये हो गया मोबाइल, एक चीज है. दिस इज मोबाइल और इसे कैसे रीड करेंगे? मोबाइल्स. फाइन चिल्ड्रेन. सो दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल. एक चीज को हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, एक से ज्यादा चीजों को विल टेल इट एज प्लूरल. एक मोबाइल, एक से ज्यादा को मोबाइल्स. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस वर्कशीट. नाउ बेंच. एक बेंच विल टेल इट एज बेंच. एक से ज्यादा बेंच को वी विल टेल इट एज बेंचेस. Then we have brush, brushes. No children, एक चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे. The words which are ending with H, जो words H से end हो रहे, can you see here? ये दोनों words इसलिए मैंने आपको करके बता दिया है. The words which are ending with H, कोई भी word जो H से end होता है उसका plural कैसे बनेगा? By adding es. Fine children. By adding es. For example, bench, benches, brush, brushes. Fine. Next we have glass. G-L-A-S-S, glass. एक glass को will tell it as glass. एक से ज्यादा glass रहेंगे तो will tell it as glasses. यहाँ पे simply we will add es. So children, singular plural सबसे पहले s भी add कर सकते हैं. We can also add es, we can also add ves. So this depends upon the rules. Next we have box. Box, B-O-X-E-S, boxes. Fine children. Box, boxes, bus, buses, B-U-S-E-S, buses. एक बस को we will tell it as bus. एक से ज्यादा बस को will tell it as buses. In my last video you must have seen, मैंने ये समझाया था, the words which are ending with O. The words which are ending with O, उसको हम लोग plural कैसे बनाएंगे? By adding es. So ये tomato बन जाएगा आपका tomatoes. Tomato बन जाएगा आपका tomatoes. Potato बन जाएगा आपका potatoes. Fine children. Mosquito आपका mosquitoes बन जाएगा. Fine. Next word is deer. No, deer का plural क्या हो जाएगा? Deer का plural deer ही रह जाएगा. So it is not compulsory कि सबका plural हो. There are some words जिनका plural और singular as it is रहता है. For example, information. Information singular भी information है and plural is also information. Then we have sheep. Sheep का singular is sheep and plural is also sheep. Fine children.
Next we have sheep. S-H-E-E-P, sheep. S-H-E-E-P, sheep. Children, मैंने अभी आपको क्या समझाया था? मैंने अभी आपको समझाया था कि जरूरी नहीं है कि सबका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा हो. जैसे डियर का सिंगुलर भी डियर है, प्लूरल भी आपका डियर है. एक सेकेंड चिल्ड्रन, मैंने गलती से यहाँ पे एस लिख दिया है. फाइन चिल्ड्रन, डियर का सिंगुलर डियर है, प्लूरल भी इसका डियर है. शीप का सिंगुलर शीप है एंड प्लूरल भी इसका शीप है. नेक्स्ट वी हैव टूथ. टूथ का मतलब होता है दांत. टूथ मतलब दांत. एक टूथ को, एक दांत को वी विल टेल इट एज टूथ. एंड इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा? टीथ. बाय सिंपली चेंजिंग द वोवल्स इनसाइड. इसके वोवल्स चेंज कर देंगे तो टीथ का क्या बन जाएगा? टीथ. T-E-E-T-H, teeth. T-E-E-T-H, teeth. Fine children, so let me write here. Next is goose. एक goose को we will tell it as goose. एक से ज्यादा goose रहेंगे तो we'll tell it as geese. We are simply changing the vowels inside. What are we doing? What are we doing here? We are doing it as geese. Goose का plural is geese. What is the plural of goose? What is the plural of goose? Geese. And what is the plural of tooth? Teeth. Fine. Woman. Now एक woman को we'll tell it as woman. एक से ज्यादा रहेंगे तो we'll simply change the vowel inside. So what we will write here? Woman. Woman. फाइन चिल्ड्रन, सी हम लोग इसका वॉवल चेंज कर लेंगे. सो दिस इज डन. नाउ वी हैव माउस. माउस, एक चूहे को विल टेल इट एज माउस. एक से ज्यादा चूहे रह गए तो विल टेल इट एज माइस. अभी हमने स्टोरी सुनी थी लास्ट वीडियो में, पेंसिल वाली. सो दिस इज माउस. एक चूहे को विल टेल इट एज माउस. एक से ज्यादा रहेगा तो विल टेल इट एज माइस. नेक्स्ट इज ऑक्स. इसका प्लूरल हो जाएगा ऑक्सन. O-X-E-N, ऑक्सन. नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड. चाइल्ड मतलब बच्चा. एक बच्चे को विल टेल इट हैज चाइल्ड. एक से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो उसे कैसे बोलेंगे? चिल्ड्रेन. C-H-I-L-D-R-E-N, चिल्ड्रेन. नेक्स्ट वी हैव मैन. जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रेन, लेट मी रब दिस. Next we have man. How we will change this? By simply changing the vowel inside. What have I done here? मैंने इसका vowel change कर दिया है. इसका plural हो जाएगा आपका man. Next we have class. Class का बन जाएगा आपका classes. What is the plural of class? Plural of class is classes. So children, these are some of the singular and plural. Let us repeat. Bench, benches, brush, brushes, glass, glasses, box, boxes, bus, buses, tomato, tomatoes. The words which are ending with O. मैंने यहाँ पे बताया है, तो words which are ending with O, उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? By adding es. For example, potato बन जाएगा आपका potatoes, mosquito बन जाएगा आपका mosquitoes. Next we have deer. Deer. Deer का plural deer ही होता है. Fine children, there are some वर्ड्स जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल एक जैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन का सिंगुलर भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल भी इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज फर्नीचर. फर्नीचर का सिंगुलर भी फर्नीचर है, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर है. सो दे आर सर्टन वर्ड्स जिसके बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम. फॉर एग्जाम्पल, डियर बिकम्स डियर, शीप बिकम शीप, टूथ बिकम टीथ. यहाँ पे मैंने क्या किया? सिंपली हैव चेंज द vowel inside. What I have done here? मैंने इनका vowel change कर दिया है. Next we have goose. Goose का भी मैंने same कर दिया. What I have done here? मैंने goose का geese कर दिया है. Then woman का woman. Mouse, mice. Ox, oxen. Child, children. Man, men. Class and classes. So children, please complete this with the help of your parents. Now let's move.
That's all for today, children. I hope you have enjoyed this video. We'll meet you soon with the new video. Till then, bye. Take care. Happy Diwali. Thank you.